तेलंगाना भर में 76वीं योम जमहूरिया की तकरीबात मनाई गई। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में योम जमहूरिया की तकरीबात का इनेकाद किया गया। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने यहां कौमी परचम लहराया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने परचम कुशाई की इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने रियासत तेलंगाना की सलाहियतों को मुल्क और दुनिया के सामने दिखाने पर जोर दिया। Prajaprabhutam government, with an aim to uplift landless agricultural labor, has come up with Indra Amma Atmiya Bharosa that provides rupees 12,000 per annum to support landless agricultural laborer family who worked for at least 20 days under MNGREGS during the year 2023-24, acknowledging their critical contribution. Agriculture and Farmers Welfare Commission was constituted to provide necessary assistance and cooperation for the welfare of the farmers. 562 Raitu Vedikas were set up with audio-visual media worth rupees 20.94 crores. Raitu Nestam is now operational in all 532 rural mandals of the state, enabling farmers, scientists and administrators to engage in regular structured video conferences. This initiative fosters knowledge, exchange and collaboration, enhancing cultural development and rural